Either negative or positive power, then it finishes at that time. Your अगर soul- पावर है नेगेटिव पॉजिटिव तो फिर वो खत्म नहीं होती. And if you have a positive power, still they are alive, helping the people. If you have a negative power, still it is alive and disturbing the people. Now, what is the ultimate end of mankind? क्या इंसान का आखिरी हद क्या है, वो इख्तिताम क्या है? इख्तिताम दीदार खुदा. It's seeing God physically. Now, does this mean that this world as we know it will continue forever, or what will happen to the world as we know it today? पूछा ये दुनिया है क्या, ये मुस्तकिल चलती रहेगी या ये खत्म होगी? नहीं, ये दुनिया खत्म हो जाएगी. It will finish. This world will be destroyed. ये एक इम्तिहान है, बस इम्तिहान खत्म हो जाएगा. This is just for an examination purpose. The exam will finish. It will finish. जब सब रूहें दुनिया में आ जाएंगी ना, फिर वापस चले जाएंगी तो खत्म हो गया खेल. Once all the souls will come in this world for exam, then the game is over. Then this will destroyed, and then all the souls will go back. तो यही वजह जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे हैं, 5 10 10 12 एक घर में. That's why so many kids are being born very fast nowadays, so that all the souls should come for exam. Yes, an estimation has been made that there are as many people living today as have lived in all of the history that has gone before. कह रहे सरकार कि यही वजह है कि जितनी आजकल इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं, रिकॉर्ड है कि पिछले पूरे दौर के अंदर इतने आदमी कभी नहीं रहे. तो नीचे रूह को नीचे ला रहा है ना जल्दी जल्दी ताकि दुनिया को खत्म करे. That's why God is taking all the souls down on the earth as fast as possible, so that the world can be finished. अब साइंस भी रूहानियत भी सब कहते हैं कि थोड़े अरसे में दुनिया खत्म हो जाएगी. That's why the scientists, even spiritualism, and everywhere, everybody is saying that the end of world has arrived. Now, this again was the next question. How do we then see the future of the world? Is there a... I'm not asking if there is a defined time limit, because one would have to be God to say Yeah, when the world will finish. yeah. But is it something that we can see that the world will end very soon? Or is there maybe another 1,000 years? Or कह रहा है दुनिया का मुस्तकबिल ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है या कि हजारों साल तक अभी रहने के चांसेस हैं? सैकड़ों की भी बात नहीं है. तो He's saying it even not, you can't say even 100 years. It's like, then how can... Is there any way that we can know this? Are there, for example, I think what I want to ask really is how do we then relate to the prophecies which are found in the holy books? what do you mean by that? Where prophecies were made that there would be certain things that would happen. And then after these things had happened, then the end of the world would come. So, what is our position in that time scale? If we have the end of the world here and the beginning here, Yeah. what position are we at the moment? Right. सरकार ये पूछ रहा है कि अगर इतना कम टाइम रह गया है तो जो मुख्तलिफ नबियों ने जो प्रेडिक्शंस की थी कि ख़त्म होने से पहले पहले ये निशानियाँ पूरी होंगी, तो कह रहा है उसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे. जैसे अगर कुछ अरसे में चंद सालों में दुनिया ख़त्म होती है तो फिर वो निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं नहीं हुई क्या? जो नबियों ने निशानियाँ बताई थी ना वो आज से कई साल पहले ही पूरी हो चुकी हैं. All those indications which different prophets have given in their books, that different things come, all the things have already fulfilled many years before. All of the prophecies? Yeah, all the. So we are saying that the prophecies contained in the Torah, the Injil, Yeah. they're all finished. उन्होंने यही बताया है कि बाप बेटी के साथ लग जाएगा, बहन भाई के साथ लग जाएंगे, दीन से निकल जाएंगे. वो रोज अखबारों में हम सुनते They have given this indication, different prophecies. You will come to know that at the near the end of the world, there will be no comparison of daughter and father and brother. They will be involving each other, and there will be no religion concept. Everybody will be doing it their own. The time has come now. बहुत से उन्होंने कहा बहुत से लोग मजहबों से निकल जाएंगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, बगैर शादियों के उनके बच्चे होंगे. That people will not want to be in religion. People will be living together without marriage. People just like that. वो तो हमने देखा अमेरिका में बेशुमार बगैर शादी के बच्चे हो रहे हैं, जानवरों की तरह जिंदगी है उनकी. He said, I've seen many people living together without any social status, and they're just living like animals. ये तो पहले से ही हो चुका है. It's already done. So does that, what, there have again been prophecies made, and every one of the major religions has a prophecy regarding the return of, whether it be Jesus Christ, whether it be Buddha, whether it be Imam Mahdi, whether it be Krishna. There is always a prophecy of a God returning Yeah. to this earth.
Again, what is the situation concerning that? कह रहे सर डिफरेंट प्रॉफिट्स ने उन्होंने जो सेइंग में लिखा है उसमें कहीं पे लिखा है कि जो बुद्धा है उन्होंने वापस आना है, हज़रत ईसा ने वापस आना है, हिंदू कहते हैं कृष्ण ने वापस आना है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुस्लिम क्या नाम मेहदी ने वापस, मुस्लिम कहते हैं मेहदी ने वापस आना है। सही कहते हैं। That's all truth. Now, are we now waiting for the return? वो कह रहा है कि अभी उनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुके हैं। इसका पूछने का मकसद ये है। आ चुके हैं। Everybody has arrived. Now, when you say everybody, can इस साल के अंदर ही तो हमको सारा पता चलेगा, वो मेहदी था, वो ईसा था। Within 1 year, it will be evident and you will come to know that who was Jesus, who was Mehdi, and who was Buddha, and who was Krishna. वो बिल्कुल इसी तरह दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं। They are already working. They're working in their field and preparing the people towards God. And within 1 year, you will come to know. जो उनके करीबी लोग हैं वो उनको जानते हैं। And the people which are closer to them, they know them. So each of these people are different people. कह रहे वो ये चारों अलग अलग है, बुद्धा कृष्ण नहीं, वो एक ही नाम है। अच्छा। ईसा अलग है, बाकी वो बुद्धा वो मेहदी वाला एक ही है। Jesus is separate. All three names are of names of one man. So this is then the concept, because we have now on the planet we have two people who are claiming to be the Maitreya, who are saying that they are God returned. How do we then deal with the fact that we have two people making this claim? Is there some way we can determine who is true and who is false? कह रहा है कि इस तरह कह रहा है कि फिर दो आदमी हुए जो वापस आएंगे और दो मिलके सारा इनकलाब लाएंगे। कह रहा है हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ये वही ट्रू बंदे हैं? हम कैसे पहचानेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये सही है या वो गलत है? चोर को चोर पहचानता है ना, नूर को नूर पहचानेगा ना। He's saying the one who steals, he recognize another, thief. The thief recognize thief immediately. Just like that, if you have a light of God in your heart, you will recognize immediately. एक चोर उधर बैठा दो, एक चोर उधर बैठा दो, उनकी आंखें टकराएंगी। If one thief is sitting in another corner, another thief is sitting in another corner, if their eyes coincide, एक मोमन उधर होगा, एक मोमन इधर होगा, इनके दिल टकराएंगे ना। If the one man of God sitting on the other corner, on the other corner, they both have light of God in their heart, they will recognize. तो मोमन उसको बोलता है जिन लोगों में नूर होंगे तो नूर नूर को पहचानेगा। Moment is the stage, the stage of a person, the one who has a light of God in their heart. That's called moment. Now, I would not presume to say that I am a saint. Therefore, how can I tell? वो कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वली हूँ या मैं वो हूँ, तो मैं कैसे नूर पैदा करेंगे। That's why he's saying create that light of God in your heart, then you will be able to recognize. जब तेरे अंदर नूर होगा ना, अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा ना, अब उसके भी अंदर अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा तो सामने जाएगा तो अल्लाह अल्लाह टकराएगा, समझ जाएंगे इधर भी अल्लाह अल्लाह है। Once the name of Allah is happening in your heart, it is reciting name of Allah through your heart throat. Another man in his heart also Allah Allah is going on. Once you come in front of him, then it will strike each other and it will get fast and you will come to know the man you are met now, he is a man of God. Is this the only way that I can determine? कहता है क्या ये एक ही रास्ता है पहचानने का? बस एक ही रास्ता है, वरना कुछ भी नहीं। There is only one way. There is no other way. You can recognize. वरना ना दाढ़ी से पहचान सकता है, दाढ़ियाँ भी लोगों को इतनी हैं और तस्वीरें बड़ी बड़ी हैं, जुब्बे भी बड़े बड़े। Otherwise, you can't recognize with the beard, you can't recognize with the clothes, you can't recognize with the outside clothes, jubba and so many things. So you can't recognize with those things. I think what worries me is, how would I know that I am not a thief recognizing another thief? कहता है कि मैं इससे परेशान हूँ, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं कैसे चोर को पहचानूँ? तो चोर बने ना फिर। When you become a thief, then you'll be able to But I mean, it is a serious question, because if you say to a thief, "Are you a good man?" he will say, "Yes, I'm a good man." क्या बोलता है? कहता है इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सही चोर को पहचाना, चोर बन जाओ बस। Yeah, thief can recognize a thief, so become a thief. यही वजह ना जिनके लोगों में जरा सी भी लाइट थी उन्होंने नबियों को पहचाना ना। That's the main reason that those people who are having a very slight amount of a light of God in their heart, they recognize the prophets. उन्होंने जाने भी दी ना नबियों And के लिए। they gave their lives for them. पहचाना तो जाने दी ना।
Because they recognize the prophets, that's why they give their lives for them. तो जिनमें ये कुछ भी नहीं था वो तो पहचान नहीं सके ना, उन्होंने मुखालफतें करी ना. And those who were not having a light of God in their heart,